Let's start. Okay. So yeah, so those who will be seeing the recording, I'm sorry I didn't start it earlier, but we're just starting the lecture, so you didn't miss anything. And since this role was already covered in the last class, but I'm just telling you some additional things now. Okay, so motivation. Motivation is something that can not only be done through motivational speech or through monetary incentive. Normally, monetary incentives are considered to be maybe the best form of motivation, because if you want your people to behave in a certain manner, you attach monetary incentive with it, and then you see that people started behaving in that manner. But this kind of motivation is short-lived. Often, people start getting normalized with that amount of money that they're getting. Now they need more, and of course, there's no limit then. So a better form of motivation is a motivation that drives you internally to do something, and that could be maybe a pat on the back. Just appreciating somebody sometimes works wonders. अमूमी तौर पे अगर साइकोलॉजिकली देखें तो इंसान जो है वो ना एप्रिसिएशन का भूखा होता है, तारीफ का भूखा होता है. थोड़ी सी तारीफ कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया, अच्छा काम है, लोगों को बता दिया देखो ये कितना इसने कितना अच्छा काम किया है, and that boosts people up. So motivation can have many different forms. इसके अलावा हमने जो अशफाक की स्टोरी में देखा, तो we saw that Ashfaq took these two individuals to dinner with him. He paid for the dinner for I think himself, although it wasn't mentioned, but we assume that he did. And then the conflict was gone. So that could be maybe an example of how a manager sometimes has to be a leader as well. But if Ashfaq was just a manager, he would have forgotten about it, and he would just start doing the same thing again, and then the conflict would have arisen again. So there was a leadership requirement at that stage in the story. Okay, so the next role that we are going to start with today is liaison. Liaise means that you connect two people, like the picture shows, maybe two different departments, maybe two different sections, so that some activity can be performed. So where in the story do you think Ashfaq acted as a liaison? Where did Ashfaq liaise? At what point? Sir, can you please repeat the question? So liaison is the process of connecting, right? So at what point in the story of Ashfaq do you think he acted as a liaison? Sir, where there was a conflict between the workers, he worked as a liaison there. And also, I'm not sure, but with the driver, and also when he talked with his higher authorities about the co-workers. Okay, maybe you take it in that sense. These things have overlaps, yes. So you're right in that sense, but there are more concrete roles for what you just explained, and we're going to come to that. But liaison, there's a specific part in the story. Abbas Sheikh, क्या बताइए? सर जब वो पेनीफ्लेक्स का इशू हुआ था तो दूसरे डिपार्टमेंट के पास उनके पास प्रिंटर था, तो उसने कनेक्ट किया था दोनों डिपार्टमेंट को, जिसके बाद ये हो गया था पेनीफ्लेक्स का इशू सॉल्व. Yes, very true. Yes. So that point in this story where Ashfaq had to speak to the regional manager, and then he went to the manager in the possession of that printing machine through the regional manager, and then the work got done. So that's where he was acting as a liaison, he was connecting two different departments, his own team and the team that was in the possession of that printer. So this is the kind of role that managers often have to do. And I mean, if I put a number on this role that managers do, so I would give it maybe 7 out of 10. It happens so frequently in the life of a manager. A manager has to connect people, especially if you're in a coordination role. The coordination is one of the most important part of project management. And which means that if you have to act as a liaison, then you need to know people. You need to have a good network. You need to have a good relationship with people. Very important, because often our nose comes in the middle. हमारी जो egoist nature है वो बीच में आ जाती है, नाक आ जाती है बीच में, ईगो आ जाती है, जिसकी वजह से हम अक्सर झगड़ा कर बैठते हैं. लेकिन trust me, it's a small world.
कहीं ना कहीं you come across the same person जिसके साथ आपने जो है वो कोई बुरा काम किया था, और in the end आप फिर जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये आपकी वीकनेस बन जाएगी। स्टीफन कोवी की जो बुक है 7 Habits of Highly Effective People, उसके अंदर ही टॉक्स अबाउट इमोशनल बैंक अकाउंट्स। इमोशनल बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं कि इफ यू गिव अ फेवर टू समबडी, यू ओपन अ बैंक अकाउंट, an emotional bank account in his or her heart. Similarly, when you take a favor from someone, you actually draw money out of it. When you do a favor, you credit money into it. तो उससे होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा फेवर्स की हुई है तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट हुआ हुआ है। अब अगर आप कुछ कहेंगे तो वो जो है थोड़ा सा ऑब्लाइजिंग महसूस करेगा कि वो आपकी मदद करे। तो दिस इज द फिनोमेना। इसका मतलब if you want to connect people, if you want to know people, help them yourself first. And then this will build a good relationship, and then you will see when a time comes when you require some help, most of the people, maybe not all, but most of the people will come forward and help you. So this was the liaison role which managers very frequently do in their lifetimes. Monitor. Leaders, managers often have to see the situation, what is going on, and this is also required because if you look at the POLC process, here we have controlling, right? And controlling will require some benchmark, as we talked about, plus the existing situation. So how do you control? You see what the benchmark was, and then you see what is happening in real time. You compare them, and if there's a discrepancy, you come into action and you try to control things. So benchmark is there in the form of a plan, but you need to know the existing situation, and that's where monitoring comes in. Where in the story of Ashfaq do you think he was acting as a monitor? Okay, who's going to guess? Where did he act as a monitor? ये मुस्कान आप बताइए। So when he took control of the situation, when they couldn't get the Pennyflex printed on time, so he took situations in his hand. Okay. There is a more suitable, there are two more suitable, I think, parts in the story. For example, firstly, let's talk about the regional manager rather than Ashfaq. Ji Abdul Rafi. Sir, I think when he developed that online system for monitoring of that new system he built so that he can check who's working properly and whether performing this task. So that is basically he's trying to make a benchmark there कि अब सही काम चलेगा सारा. Yes, so at that point, in a way, Ashfaq had actually failed as a monitor because he didn't know that this kind of conflict existed between Sana and Hum. He only came to know when this situation arose. So, and that was the reason why then he ordered the development of this IT system, which could help him in monitoring the performance of people, maybe if conflicts are happening, maybe if things are not getting done on time, things like that. So he started acting as a monitor after that. But if you look at the regional manager, somehow he also came to know that there's a rift between team members working with Ashfaq. How did he come to know? He must have had some sources. He must have had some monitoring system. Now, if we talk about the real life situation, of course, these IT systems help, but at the end of the day, it's the people. It's the people on the ground. So it often happens that you have some connections on the ground. और इसके ऊपर मजीद बात करें जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे होंगे कि असल में ग्राउंड में हुकाम होता कैसे, खासतौर से पाकिस्तान के अंदर. तो लेकिन ये मॉनिटरिंग is very important. Why? Because if we look at the POLC process, so maybe monitoring comes in between here somewhere. Because you have to monitor in order to take action, in order to control things. So monitoring comes here at this point somewhere. So this was monitoring. Disseminator.
सबसे पहले तो कोई ये मुझे बताया कि डिसेमिनेटर का मतलब क्या होता है? What is the meaning of this fancy word? Disseminate. Come on, guys, you don't need CP marks. Sir, Ji spreading Alima. news like as a working as a speaker, like to communicate or to spread news or to command. Okay, you said communicate and spread news. Good. Ji Alima. Sure, like in a formal sense, to share information, or again, like Mariam said, to spread news, something new that you got to know, you tell other people about it, you inform them about it. And in like the general sense, it's also used for someone who gossips a lot, or you know, something Okay, that someone does let's not stick to want sharing others- information, right? Yeah. Okay, there's a comment to circulate. Mariam Asif. लगता है मरियम का माइक काम नहीं कर रहा. To circulate. Okay, yes. So communicate. अगर हम और से देखें तो ये जितनी चीजें आप लोगों ने बताई ये सारी कम्युनिकेशन के जुमरे में ही आती हैं. सही है? So communication is maybe a general term, the heading, the main category, and these are different forms of communication. What form of communication is dissemination? Dissemination is the form of communication where you do knowledge sharing, yeah, information sharing on a mass scale, on a large scale, with all the people of the organization, or at least with a very large proportion of the people of organization. This is called dissemination. So dissemination sometimes is necessary, especially when you have to maybe communicate your vision. You have to endorse and force and try to embed that into the mind of the people, and you keep on talking about it. You keep on disseminating about it. Newspapers are a form of dissemination. WhatsApp nowadays is the tool for dissemination, especially for fake news. So dissemination is mass spread through whatever channels you're trying to use. Social media, आजकल बहुत अहम channel है, newspapers है, TV है, radio है. This is all called dissemination. Ji Amir. Sir, I have a question. Sir, spokesperson is also an informational role of a manager, right? So I was wondering what is the difference between a spokesperson and a designator? हाँ, उस पे भी हम आते हैं. Next slide में खास spokesperson ही की है. So let's finish and then we'll come to that. So dissemination is a form of communication, लेकिन it's kind of a mass spread. एक चीज और ज़हन में हो, communication is a two-way thing, right? You cannot just say something and then assume that the other people understood. It always requires a feedback loop. That's when the communication gets completed. So in dissemination, although your mass is spreading, but managers need to somehow maybe pick some people and verify that they actually know that the news has been disseminated. So dissemination is spread of news information on a mass scale. In Ashfaq's story, do we see any place where he was acting as a disseminator? Is there any place in the Sir. story? Yes. Sir, I think like when he communicated with the higher authorities about the problem, and so I think maybe there he worked as a disseminator. Okay. इस पे भी हम आते हैं. Although he was, of course, you're right in the sense that he was communicating things. Any other place? There was a hand raised, लेकिन वो दोबारा जल्दी से नीचे हो गया. Sir, maybe लेकिन सर वो कॉन्फ्लिक्ट में तो एज अ मतलब सर आपने तो कहा ना कि डिसेमिनेटर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन को बताता है, फैलाता है और उसको मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो सर जब उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहां पे तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था ना, वो तो वहां पे उसने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की थी. तो आई थिंक सो एज अ वहां पे तो वो एज अ डिसेमिनेटर नहीं करेगा, उसका रोल आई नहीं थिंक होगा. स्टोरी जो मैंने लिखी है उसके अंदर ये वाला जो रोल था शायद वो मिस हो गया. मैंने कोई ऐसा इंसिडेंट उसमें नहीं डाला जहाँ पे वो ये जाहिर हो सके कि डिसेमिनेटर है. लेकिन ये कि एक हाइपोथेटिकल स्टोरी हो सकती थी कि अशफाक जनाब सबको बोलता कि
जनाब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको खत्म किया जाए और जो है हम जो है मिलजुल के काम करें, स्टफ लाइक दैट। डिसेमिनेशन की नीड एज आई सेड मैनेजर की लाइफ में उस वक्त आती है जब एक विजन डेवलप करना हो, एक खास कल्चर डेवलप करना हो, बहुत से लोगों के खास डायरेक्शन में चलना हो। इन दैट केस डिसेमिनेशन इज नीडेड। जब आपने कोई स्कीम अनाउंस की हो कि जिसकी वजह से जो है लोगों को बेनिफिट हो रहा है या आप कोई खास इंसेंटिव मास स्केल पे अनाउंस कर रहे हो, एंड दैट्स द पॉइंट वेयर डिसेमिनेशन इज now needed. Now the question came, is being a spokesperson also being a disseminator? But there's a difference. A spokesperson is means that you are being a representative or you are speaking on somebody else's behalf. And there were a couple of occasions in the story, couple of points in the story where Ashfaq acted as a spokesperson. What were those? Yes, Alima. Sir, when he was questioned about his subordinates by the regional manager, he was also defending, but he was also representing that there wasn't really much of a conflict, trying to defend them somehow. When he was talking to the regional manager, that's what you're saying? Uh-huh. Yeah. So he was representing his team, he was defending the team, yeah, he was acting as a spokesperson. And there's another point in the story. What is that? I don't Sir, when he remember that. talked about the printer, sir, when he talked about the printer to other person to arrange that printer, there he also worked as a spokesperson. Yeah, partly true, but mainly when he went to present his company to the clients, what was he doing? Yes, sir. He was being a spokesperson, right? So Yes, a sir. manager, I mean, you're attracting business, you're a manager, but you of course have to bring in business, you have to convince the people that you do good work, and that's where you also act as a spokesperson. हम सब अपने जो फेवरेट पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके स्पोक्सपर्सन बने होते हैं, उनकी ये बात कर रहे होते हैं, वो कितने अच्छे हैं, उनको डिफेंड कर रहे होते हैं। ये जो प्रोसेस है ये being a spokesperson. So yes, it was 2 points where he acted, Ashfaq acted as a spokesperson. Halima, you raised hand, but I guess it was a mistake. Yes, sir. Entrepreneur. अब entrepreneur का जब हम वर्ड सुनते हैं तो एक तो ये कि काफी जो है ना आजकल की फैशन टर्म है ये, और मिन्सबर्ग के रोल जो है वो काफी पुराने जो है उसने दिए थे, काफी अरसा हो गया। तो what did he mean when he said a manager should also be an entrepreneur? We'll come to this, but before that, let's define who an entrepreneur is. काफी फैशन में ये स्टेटमेंट, तो आप सबके पास कोई ना कोई इसका आइडिया होगा। Who is an entrepreneur? जी आलिमा। So I think we can say to some extent this word is synonymous with an innovator to some extent in some senses. Okay, so entrepreneur is innovator. All right. Yeah. And then Anything he else? also plans in a way that he is able to make his plan successful. So he also has the skills, not only the ideas. Plan in a way that he's able to make it a success. That's what you're saying. Yeah, make his ideas a success. Yeah, he makes it work. Okay, maybe we say creative planner. Right, Abdul Rafi. Sir, the person is maybe who takes risk and manages the risk, and like he is behind everything, like it's his idea, and yeah, maybe that sort of. Okay, risk manager आप कह रहे हैं, और normally risk का word हमेशा सुनने में आता है जब भी हम entrepreneurship की बात करते हैं। Mariam also says that a risk taker. Okay, is that it? Innovator, creative planner, risk manager, or risk taker? Let's see. Rida says, who brings together all resources to initiate a task. Okay, resource manager maybe. Right. To who brings together? Okay. I expected a lot of other answers as well. Entrepreneur का जो word है, अगर उसके हम रूट में जाएंगे, अगर उसकी हम etymology को देखें तो कोई French word entrepreneur के नाम से आता है, इसका मतलब होता है to undertake. तो हम assume करते हैं anybody who undertakes a task. But जो modern understanding है इस word की, वो है एक ऐसा successful business person जो कि एक बहुत ही creative solution लाए किसी problem का,
और एक सक्सेसफुल कंपनी को एस्टैब्लिश करे. दिस इज व्हाट an entrepreneur means in today's understanding. Salman Sheikh says, I think who takes decisions and provides solutions for the problems. Yes, provide solution for the problem, of course, and decisions, of course, have to be taken. What I have discovered in creating ventures myself and seeing people who have been doing that, studying about the successful people, I see three main steps or characteristics or essential elements of entrepreneurship. Uswa Mehzad says, basically he takes an initiative to take risks for profit. Yes, initiative is the keyword here. Very, very true. तो वो तीन essential elements क्या हैं? पहला element, an entrepreneur has the capability of identifying problems. और जब हम आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हर किसी के पास एक टैलेंट नहीं होता कि वो प्रॉब्लम को एक्चुअली इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस आइडेंटिफाई कर सके. तो अक्सर लोग जो है वो प्रॉब्लम को कुछ और समझ रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आईबी के अंदर अगर आप जाएं तो आपको नजर आ रहा होता है कि वो जो ये जेनिटोरियल स्टाफ है, ये अक्सर वो अमन सीडी के सामने से आप गुजरे ना, तो वहाँ पे वो जो पिजन ड्रॉपिंग्स होती हैं उनको साफ कर रहा होता है. अब वो स्टाफ जो है वो 2-3 लोग जो है वो वहाँ से हर हफ्ते में कोई 8-10 घंटे तो सिर्फ वो उसकी सफाई में लगाते होंगे पिजन ड्रॉपिंग की. तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम को नजर ये आ रही है कि जनाब पिजन ड्रॉपिंग आ रही है तो उसको साफ किया जाए, ये प्रॉब्लम है. उसका हल उन्होंने निकाला कि वो लोग साफ करेंगे. लेकिन असल प्रॉब्लम और क्या हो सकती है अगर इसमें आप आइडेंटिफाई करना चाहें? What is the actual problem here? Any ideas? I hope you can connect what I'm trying to tell you. Trees. Okay. G. Mariam, you want to say something? Sir, maybe it's the presence of trees that, because of which the pigeons have droppings over there. अच्छा, trees are the problem. यार ये जो सोच है ना मरियम, ये आप वैसे तो आप जो है सही आंसर कर रही हैं, लेकिन ये के बाद मैं कहता चलूँ पाकिस्तानियों की एक पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. And I'm not talking about you, Mariam. So you, in a way, you're right because trees would attract the birds. लेकिन अक्सर औकात मैंने देखा है कि लोग अपने मसाइल का हल जो है ना वो दरख्तों को काटने में निकालते हैं, लेकिन तलाश कर लेते हैं. सर मैंने आपकी क्लास में एक बार बोला एंड मेरी बेइज्जती हो गई. नहीं, ये बेइज्जती नहीं कर रहा मैंने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा इस केस में कि वो अट्रैक्ट करेगा इन दैट सेंस. लेकिन एक हमारी मिजाज है, मैं चाहूंगा कि इसको हम बदलें क्योंकि यू आर द फ्यूचर लीडर्स, यू गाइस आर द फ्यूचर लीडर्स इंशाल्लाह. तो मिजाज ये है कि यार दरख्तों को कोशिश करें ना काटा जाए. हम गली मोहल्ले में देखते हैं जनाब वो ऊपर बिजली की तारें हैं, वो जो है दरख्त बढ़ रहा है तो दरख्त ही पूरा काट दो. ये नहीं हर सकते कि उसकी शाखें थोड़ी सी कम कर दो, या बिजली की तारों के बीच में एक लकड़ी का पीस लगा दे तो उससे वो कनेक्ट टच नहीं होगी. आसान काम है लेकिन बस दरख्त काट. और वो जो आसपास के लोग होते हैं ये झुग्गियों में रहने वाले, उनको तो लकड़ी मिल जाती है फ्री की, तो वो तो खुशी खुशी आगे काट रहे होते हैं. कोई पानी की जहाँ पाइपलाइन ब्लॉक हो रही है तो 10 दरख्त काट दिए वहां से. तो ये आई थिंक दरख्त जो है, आप अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, व्हेन आई फर्स्ट लैंडेड इन ब्रिटेन, तो जो पहली चीज बाहर निकल के मुझे महसूस हुई, 2 चीजें. जो पहला एक होता है ना सेंस कि यार व्हाट्स द डिफरेंस. नंबर 1 क्लेanलीनेस एंड नंबर 2 ग्रीनरी. ये मेन डिफरेंस आपको नजर आता है. आप लोग भी अगर लेट्स से कभी दुबई जाएं या उधर जाएं कहीं जाएं, दुबई में तो खैर इतनी ग्रीनरी नहीं है, लेकिन ये कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इट्स वेरी ग्रीन. और उसकी वजह से होता ये है कि बारिश भी बहुत होती है बिकॉज दिस ग्रीनरी क्रिएट्स सम कोल्ड एनवायरनमेंट. उसकी वजह से बादल जो कंडेंस होते हैं और बारिश ज़्यादा होती है, तो एक साइकिल बन जाती है. इसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट अच्छी हो जाती है, क्लीन हो जाती है, ग्रीन हो जाती है. हमारे यहाँ खासतौर से कराची के अंदर हमारे तो म्यूनिसिपल जो काम हुआ है ना, म्यूनिसिपैलिटी है वही दुश्मन है. टिम्बर माफिया को तो और जो है वो लकड़ी फी के हाथ आ जाती है. तो प्लीज ट्राई टू चेंज दिस. हमारा जो एटीट्यूड है ना, मेरा तो ख्याल है कि हर शख्स को अपनी लाइफ टाइम के अंदर कोई कम से कम 10 दरख्त तो लगाने चाहिए, इतने कि जो वो खुद अपने सामने बड़ा होते देखे. हमारे यहाँ कैंपेन होती है दरख्त लगाने की तो होती हैं, लेकिन उनकी टेक केयर कोई नहीं करता. वो लग के कुछ दिन बाद मुरझा के खत्म हो जाते हैं. तो वो प्लांटेशन कैंपेन तो बड़ी जोरों शोर से होती है, उसकी जो है
वाह भी बहुत होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि 100 लगाए तो शायद एक बचा है उसमें से। तो इस चीज को बेहतर बनाने की जरूरत है। आलिमा, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, sir. I was saying maybe अभी जो आपने सवाल किया था उस एरिया का, maybe we can install a shade in there and make sure that the branches of the trees are above that shade, so that shade Okay, wouldn't yes. have to. Yes, We wouldn't have तो to. एग्जैक्टली, तो ट्रीज को मे बी सेव करके हम ये कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं आप दोनों ने ट्रीज को वो बनाया, तो ट्रीज आर नॉट द रीजन। वहां पे रीजन बेसिकली है वो जो वहां पे दरख्त लगे ना, उसमें शायद कबूतर बैठते नहीं है, वो उसकी शाखें ऐसी हैं। वहां पे जो असल रीजन है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो है वो पिजन ड्रॉपिंग्स नहीं है, प्रॉब्लम है पिजन्स का किसी जगह पे बैठना। तो अब ये मॉनिटर करें वो बैठ कहाँ रहे हैं। वो बेसिकली वो उसको जो पिलर है ना, पिलर के ऊपर एक एच सी बनी है, उस पे आके बैठते हैं, कभी आप गौर करें। और उसकी वजह से, और दिस इज अ वेरी कॉमन इशू। और आप कहीं पे भी जाएं, लेट्स से आप हबीब यूनिवर्सिटी जाएं, तो वहां पे आप देखेंगे जितनी भी इस तरह की एजेस है, वहां पे उन्होंने कांटे से लगाए हुए हैं, लंबी लंबी सी मेटालिक रॉड्स लगाई हुई हैं, पतली पतली, तो पिजन बैठते ही नहीं है वहां पे। तो जो पॉइंट मैं यहाँ पे रेस करना चाह रहा था, एंड मरियम इन नो वे मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा था, प्लीज डू नॉट टेक इट दैट वे। मैं सिंपली कह रहा था कि यस, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दरख्त के हवाले से ये अच्छा मौका मेरे हाथ आ गया कि हम थोड़ी सी जो है अपने जहन बदलने की, दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान को इवन इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो दरख्त लगाना जरूरी है, क्योंकि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका होगा, कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ेगी, इन्वायरमेंट बेहतर होगी, लोगों की सेहतें बेहतर होंगी, माहौल अच्छा होगा। तो दरख्त, trees are so important. So Mariam says should make bird houses. हाँ बिल्कुल, ये वही है, आपने अच्छी बात की कि उनको सिर्फ भगाएं ना, बल्कि उनकी वेलफेयर के लिए भी कुछ करें। तो बर्ड हाउस बनाए तो वहां पे जाएंगे इधर आने के बजाय। तो इसका मतलब ये हुआ कि द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर who has to identify a problem, the problem has to be identified correctly. कहा जाता है a problem well defined is half solved. अगर आपने अच्छी तरह से प्रॉब्लम को समझ लिया ना, तो वो आधी तो हल हो गई वैसे, अब आपको शायद आधा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। तो अगर हम कह रहे हैं एक मैनेजर एक एंटरप्रेन्योर भी होता है, इसका मतलब मैनेजर के अंदर एक क्वालिटी होती है, अगर वो प्रॉब्लम होती देखे जिससे वजह से प्लान सही फॉलो ना हो रहा हो, तो वो रूट कॉज को आइडेंटिफाई करे, बजाय से कि सुपरफिशियली किसी चीज को जो है वो छुपा दे, जल्दी में बस काम हो जाए। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करे। तो हमने देखा कि जो अशफाक था उसने लोगों को टैकल किया, और वहां पे ऑल्दो ही आल्सो एक्टेड एज अ लीडर, लेकिन ये कि ही टुक द टू किड्स टू अ डिनर। रूट कॉज क्या था जनाब? उनमें टेंशन थी, वो रिवैलरी थी, उस रिवैलरी को खत्म करो, हो सकता है काम अच्छी तरह से मैनेज हो जाए। अब वहां पे अगर वो रिवैलरी रहती, उसने गलत फॉर्मेट दे दिया था, तो ये दोनों खुद कांटेक्ट करके उसको हल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपस में जनाब जो है वो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। तो दैट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम। So entrepreneurs identify the actual problem. But what do they do after this? They don't just identify, they take action. As you guys also said, कि वो initiative लेते हैं, तो yes. And initiative also comes with a risk. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो रिस्क भी लेते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं या अफोर्डेबल रिस्क लेते हैं। तो this is the second important element. All those people who talk a lot about problems, who identify a lot of problems, but they don't do anything about it, which is I think 99% of us. हम बहुत पैसों पैसा करते हैं, लीडरों को बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम सब में है। इसका मतलब 99 जो हम पर्सन में जो एंटरप्रेन्योर्स नहीं है इन द ट्रू सेंस। एंटरप्रेन्योर्स एक्शन लेते हैं, सही है। एक और थर्ड एलिमेंट है जो कि यहाँ पे बहुत जरूरी है, इन सब को कॉम्प्लीमेंट करता है दोनों को, वो ये है कि अब अगर हमें एक्शन लेना है, तो फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि जनाब पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो अब ज्यादातर हम ऐसे लोग बोलेंगे सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एन एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड। एंटरप्रेन्योर्स कहता है सही हमें कुछ करना चाहिए, लेट्स से मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है एक छोटा सा काम हो मैं कर सकूँ, लेकिन मैं वो कर लेता हूँ। अब पेड़ लगाने की लेट्स से बात आती है, तो मैंने कहा बहुत मुश्किल काम है। एक पेड़ अगर हम लगा ले एक साल में एक बार, उसको टेक केयर करें, एक साल में बड़ा हो जाए, दूसरा लगा दें, वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। तो जो भी कर सकते हैं हम, जो भी वो मैनेजर कर सकता है विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, वो करेगा। दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज। Entrepreneurship does not mean that you have an idea, you find a problem, you identify a solution, now you went on a spree of raising funds. Raising funding का पॉइंट आता है एक पॉइंट पे,
लेकिन ये कि शुरू में आप पैसा देखने लग जाए, पहले आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दें, पहले अपनी रिसोर्स से करके देखें, प्रूफ करके दिखाएं लोगों को ये हो सकता है, और फिर लोग खुद ही कन्विंस हो जाएंगे बात। तो इसलिए थर्ड पॉइंट बहुत अहम है कि टेकिंग एक्शन यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत से लोग इसी वजह से एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते। वो समझते हैं कि यार इतना पैसा होगा तो हम कुछ करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जो कुछ आपके पास है उसमें जो हो सकता है करें, और आहिस्ता आहिस्ता यू सी ग्रेजुअली यू विल ग्रो एंड यू विल रीच टू दैट पॉइंट वन डे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे मैंने पैसा तो कहीं बात ही नहीं की, जबकि आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप जो है जनाब, एंटरप्रेन्योर्स की लाइफस्टाइल एक वर्ड है कि बड़े अमीर होते हैं, लैम्बोर्गिनीज और जनाब फेरारी से तो कम बात ही नहीं होती। तो वो सब कहाँ से आया? वो सब आता है बाद में। असल जो एटीट्यूड है ना, इट ड्राइव्स यू टुवर्ड्स दैट। तो सक्सेसफुल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट इज द नेक्स्ट स्टेप, बट बिफोर दैट दीज थ्री क्वालिटीज मस्ट बी देयर फॉर इन अ पर्सन टू बी एन एंटरप्रेन्योर। और मैनेजर्स भी एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। हम एक वर्ड यूज करते हैं मैनेजमेंट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का जो वर्ड है वो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के लिए यूज होता है जो कि एम्प्लॉयड हो, मतलब वो अपना बिजनेस तो ना कर रहा हो, लेकिन दैट पर्सन एक्ट्स एज एन एंटरप्रेन्योर विद इन दैट बिजनेस। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि इस तरह के जो है वो सोल्यूशन तलाश करते हैं। अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं जुगाड़ का उर्दू में, लेकिन अगर अंग्रेजी में इसको तर्जुमा करें तो वो बन जाएगा मेरे ख्याल से क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। एंड ये जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये आपको बहुत से मैनेजर्स के अंदर नजर आएगी, जो कि आप विद इन द रिसोर्सेज सोल्यूशन निकाल के लाते हैं और उसका फायदा होता है। आई रिमेंबर देयर वाज दिस गाय वकास। सो वकास हैड दिस कंपनी जिसके अंदर ही वुड yeah, he used to sell I think clothing over Daraz। कोई 4-5 साल पुरानी बात है, जब दराज में नए लोग जो है वो आके सेल करना शुरू हुए थे। बाद में दोस्त का नाम ही बहुत बुरा खराब हो गया। तो एनीवेज ही यूज्ड टू सेल ऑन इट। और शुरू में दराज पे जिन लोगों ने सेल किया वो जानते होंगे कि दराज फोटोग्राफी की सर्विसेज फ्री दिया करता था। तो अगर आपने जो है कुछ सेल करना है तो दे वुड डू द फोटोशूट ऑफ योर प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देन यू कैन सेल ऑन दराज। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि फिर उन्होंने ये सब्सिडीज खत्म करना शुरू करने के पॉइंट है, उन्होंने कहा कि भाई अब हम कोई फोटोग्राफी नहीं करेंगे, अब आपको वो खुद करनी है। अच्छा जनाब, अब वकास ने कहा कि यार ये तो मसला हो गया, ये तो प्रॉब्लम है, इसको कैसे हल किया जाए बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। तो उन्होंने क्या किया कि यार अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि एक जगह मेरे पास है, मैं उसमें एक स्टूडियो सा बना लेता हूँ। कैमरा मेरे पास पड़ा हुआ है एक, उसमें जो है उस कैमरे को मैं यूज करके फोटोग्राफी करूंगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मॉडल्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए तो मॉडल चाहिए और वो जनाब वो ठीक ठाक पैसे लेते हैं, तो वो कहाँ से आएंगे। तो वकास ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर पोस्ट करता हूँ कि जो लोग अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें मॉडलिंग का, वो हमसे रब्ता करें, हम फ्री में उनके लिए पोर्टफोलियो बनाएंगे। फ्री में नहीं, अभी के बहुत ही मिनिमल चार्जेस के अंदर। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स थे उनको शौक था जनाब कि वो अपने जो है वो एक बनाए कि अच्छे कपड़े पहन के तस्वीरें खिंचवाएं और जनाब वो फिर आगे दें ताकि उनकी कॉल आए। तो बहुत से स्टूडेंट्स आ गए। अब हुआ क्या कि वकास को मॉडलिंग करवानी थी अपने कपड़ों की, वो भी हो गई, और ना सिर्फ वो हो गई बल्कि शायद एडिशनल कुछ पैसे भी आ गए जो वो लोग दे रहे थे जो कि अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाह रहे थे। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर using available resources, this is how वकास came up with a solution। और उसका काम भी हो गया अपना भी, और जो वो दो लोग थे उनको भी खुशी खुशी कम पैसों के अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाने में मिल गया। So there are so many things that there are so many occasions in the life of a manager where he or she has to act as an entrepreneur. So Ashfaq did act as an entrepreneur. At what point would you like to highlight? Where do we see Ashfaq acting as an entrepreneur? Sir, when he told his driver that he will change the seat covers and
There he also worked as an entrepreneur, like he In a way, talked yes. about the additional, he used his own resources and he Yes. took them to, on the dinner. There he also uses his own resources. So I think Yes. he was Yes. working there. That could be an example of creative problem solving of being an entrepreneur. Yes. Uh, so there are different occasions where you can see in the lives of manager जहाँ पे वो entrepreneur तौर पे उनको act करना पड़ता है क्योंकि हमेशा top management आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई funds approve नहीं करेगी. जी उसवा? Like the printer problem that happened with Ashfaq, he had to talk to the driver and he offered to fix his car seats just so that he could get the Panaflex printed earlier. So he was basically using his own money for this, and he took this decision at the right time, and Yes. Yes. because Very of true. this, the Yes. problem got solved. Yeah. It was a creative problem solving. He acted as an entrepreneur. Very true. Uh, Okay, the next thing is a disturbance handler. Self-explanatory. I don't think we need to talk too much about this. As I said, अगर मैं liaison को 7 out of 10 marks देता हूँ in terms of frequency of happening in the life of a manager, तो मैं disturbance handling को मेरे ख्याल से 8 या 9 दूंगा out of 10. क्योंकि it is actually the process of disturbance handling जो कि मैनेजर को सबसे ज्यादा करना पड़ता है, स्पेशली जब हमारे पास प्लान बहुत ही डिटेल और अच्छा ना हो, जो कि अक्सर होता है हमारे, फिर चीजें इतनी अनसर्टन होती हैं, लोग रिलायबल नहीं होते, तो डिस्टर्बेंस हैंडलिंग इज द मोस्ट, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग थिंग्स इन द लाइफ ऑफ अ मैनेजर. तो मैनेजर हैज टू बी अ डिस्टर्बेंस हैंडलर. और यहाँ पे अगर हम लेट्स से वी टॉक अबाउट अशफाक स्टोरी, तो हमें नजर ये आता है कि what was the point where he handled that disturbance. So of course there was this conflict between Sana and Hamd. That is the most obvious example. और फिर ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आई, ऑफ कोर्स ड्राइवर को राजी करना है, बॉस को राजी करना है, थिंग्स लाइक दैट, वो सब के अंदर managers act as a disturbance handler. Resource allocator, ये हमें कहाँ पे नजर आता है? Did Ashfaq act as a resource allocator in this story? Sir, he used his own resources. Mm-hmm. So I think he might be. Yeah, own resources भी है, लेकिन own resources समझने के it's kind of a win-lose situation. लेकिन I think वही driver वाली जो example अगर हम दोबारा लें, तो he had these resources and he used those resources. Yes, sir. to convince the driver. So he was acting as a resource allocator. Similarly, he got developed the monitoring system. So there must have been some resources available somewhere जिसके through जो है अशफाक ने जो है वो system build करवाया. तो resource allocation यहाँ पे एक क्वेश्चन ही पैदा होता है, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, why would somebody listen to his or her manager? What would be your answer? So can you please repeat the question? Why would somebody listen to his or her manager? जी अब्बास. सर आप मैनेजर को इसलिए बात सुनते हो क्योंकि फर्स्टली तो वो अथॉरिटी में है, दूसरी चीज वो डिसीजन मेक कर रहा है, उसके पास ज्यादा नॉलेज है इस सिचुएशन की और वो डिसीजन मेक कर सकता है, तो जाहिर है उसको ही सुनेंगे, उसकी बात मानेंगे. Okay. Mohammad Hamad. Yes, Hamad. Sir, am I audible? Yes, you are. सर हम saying कि सर अगर आज आप मैनेजर का साथ देंगे, किसी को उसका काम में हेल्प करेंगे, उसका काम निकालेंगे, उसकी बात मानेंगे, तो कल को मैनेजर भी आपकी कहीं सपोर्ट करेगा एचआर में या फाइनेंस के अंदर कहीं आपकी सैलरी के टाइम वगैरह पे. तो resource allocation basically ये जो उस वक्त. Sir, the manager has the bigger picture of the whole situation, and if we're working under him, we have the smaller picture. So he's basically supposed to guide us, so we should be listening to him. And that guiding भी है वो सारी है, लेकिन जो मैं यहाँ पे पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ वो रिसोर्स एलोकेशन के पॉइंट में, ऑफ कोर्स देयर हैज द अथॉरिटी, वो आपको फायर भी करवा सकता है, लेकिन दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. अक्सर लोग जो है वो जो पुराने होते हैं उनको आराम से फायर भी नहीं किया जा सकता, उनको आराम से बहुत ज़्यादा डांटा भी नहीं जा सकता क्योंकि फिर रिलेशनशिप खराब हो जाता है. तो रिसोर्सेज कुड बी वन ऑफ द थिंग्स दैट अ मैनेजर कैन वाइजली यूज टू मोटिवेट, to convince people.
और in resource की जो allocation है that could be used as a tool. Although as I said कि internally motivation के internal motivation के लिए शायद monetary incentives long term काम नहीं करते, लेकिन at certain points in time इस तरह पाके केस में उनको नजर आया ड्राइवर को सीट कुशन लगवा दिए, इस तरह की सिचुएशन अक्सर आती है कि जहाँ पे आपको रिसोर्स एलोकेटर का कैप पहन के काम करवाना पड़ता है. There's a comment by Mariam, they trust him to direct them well. Yes, so that could also be a reason. Negotiator. And one thing that is, I think, very important here is this. Negotiation, a successful negotiation produces a win-win situation. Where did that happen? Yes, Ahmad. So it happened when he negotiated with the driver Negotiate with the driver. to miss his lunch break and get the job done. Yes, so maybe that is the most, I think, obvious example. कि ड्राइवर के साथ जो है negotiate किया. यहाँ पे एक चीज और समझ लें, being a manager, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, सही है, और वो उसको आपकी जो है वो बात जनाब सुननी चाहिए. लेकिन ये दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. अगर आपने कोई 2-3 बार ऐसे ही किया कि जबरदस्ती काम करवाया, ऑल्दो यू हैव द अथॉरिटी एंड यू आर अलाउड टू डू दैट, लेकिन ये कि फिर वो 4-5वीं बार ना वो जो है काम सही नहीं होगा, टेंशन सी हो जाएगी, और जो है सिर्फ खौफ के मारे लोग काम करेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा कुछ ना कुछ स्लिप हो जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा काम कर देंगे. अब एक ड्राइवर है, अगर आपने उसके साथ बहुत सख्ती की तो वो जब उसका मूड नहीं होगा ना, वो गाड़ी में कुछ खराबी करके बैठ जाएगा. और ये बहुत कॉमन है, ये मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका कि वो कुछ ऐसा कर देगा गाड़ी के अंदर, छोटा सा फॉल्ट होगा लेकिन जनाब गाड़ी नहीं चल रही. अब हम कह रहे हैं कि जो है वो एक ड्राइवर, कौन नाम क्या था उसका, अब्दुल रहमान एक ड्राइवर होता है, अब्दुल रहमान जल्दी करो वहां पहुंचना है. वो सर वो गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही. अच्छा क्या हो गया? पता नहीं सर, सुबह तो सही चल रही थी, अभी पता नहीं क्या हो गया. तो अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले शायद आपने जो है फोर्स किया था, और अक्सर मैनेजर ऊपर से भी फोर्स हो रहे होते हैं, जबरदस्ती जो है काम करवाया जा रहा है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. हम यहाँ पे बहुत आराम से बात कर रहे हैं किस तरह मैनेजमेंट होती है, लेकिन वो जब आप असल में सिचुएशन में जाते हैं ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो ऑल दीज थियरीज. फिर सब कुछ जो है वो खत्म हो जाता है. तो एनीवेज, तो लेकिन ये कि theoretically speaking still I mean we have to understand this theory कि win-win situation is very important. अगर आप जबरदस्ती काम करवाएंगे 2 बार 3 बार हो जाएगा, चौथी बार मुश्किल होगी. तो इसलिए always try to come up with a creative solution. Always try to create a win-win situation. जी आलिमा. Sir, can you say that the negotiator and the disturbance, or can you say that the negotiator is a type of a disturbance handler? Negotiation could be one of the tools to handle a disturbance, right? This is what we can say. तो ये डिफरेंट समझने के रोल थोड़ा सा ओवरलैप है रोल्स के अंदर, लेकिन निगोशिएशन हमेशा डिस्टर्बेंस हैंडलिंग के वक्त ही नहीं आती. निगोशिएशन कभी हो सकता है आप किसी क्लाइंट से निगोशिएट कर रहे हैं, राइट, उससे आप बात कर रहे हो कि जिस तरह हो गया, उसने प्रेजेंटेशन की अपनी जो है, he was acting as a spokesperson, और acting as a spokesperson he was also negotiating with them maybe to get the project. So negotiation, there could be many overlap between the roles. Because negotiation has its distinct role as well. तो win-win situation create करनी है, और this is going to ensure a long-lasting peace of mind for you. क्योंकि otherwise अगर आप ऑर्डर करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, कुछ मौके पे तो काम हो जाएगा, बाद में you will face difficulties. अब सवाल ये पैदा होता है कि मिन्सबर्ग साहब जो कि एक वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और वहाँ पे उन्होंने शायद कुछ लोगों को स्टडी किया, उनकी ऑब्जर्वेशन के अंदर ये कोई 8-9 रोल्स जो थे वो आए, और उन्होंने जनाब थ्योरी दे दी कि जनाब हर मैनेजर ये रोल जो है वो प्ले करता है. क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इज दिस द एंड ऑफ द वर्ल्ड? इज दिस रिटन इन स्टोन? क्या इसमें से कुछ रोल्स गलत हैं या कुछ एडिशनल रोल्स भी होने चाहिए? और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि being students of undergrad level, you should have this analytical or critical ability कि जो information आपके पास आए उसको as it is नहीं लेना,
हो सकता है कि वो गलत हो सकता है कि वो मॉडिफिकेशन मांगती हो सकता है कि वो उस सिचुएशन में फिट ना होती हो जिसमें हमें, इसके बहुत ज्यादा चांस है। सही है, तो ये एबिलिटी आपको अपने अंदर लानी है। इवन व्हेन आई से समथिंग यू माइट क्वेश्चन, पता नहीं सर कह तो रहे हैं ये किस हद तक दुरुस्त है, और हम अमूमन ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी चीज आती है उसको हम आंखें बंद करके फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि वो इमोशनली हमारे लिए सूदिंग होती है। दिस इज वेरी रॉन्ग, इसी वजह से फेक न्यूज फैलती है। और खासतौर से हमारे घर के जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो ये काम बहुत अच्छी तरह करते हैं आजकल माशाल्लाह, और उनको जितना भी समझाओ उनकी समझ में नहीं आता, लेकिन उनको बस वो शौक होता है कि फॉरवर्ड करने का और उसके ऊपर लाइक्स लेने का। तो इसलिए दैट क्रिटिकल एबिलिटी शुड बी देयर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या कुछ मिसिंग रोल्स हैं इनमें, कुछ एडिशनल होने चाहिए, या इनमें से कोई है ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? Okay, Mariam says yes, being objective. Okay, one thing let me tell you, try to understand the difference between characteristics and roles. A role comes with a lot of characteristics, but what is the name of that role that the manager has to perform? जी आलिमा। सर आई थिंक यहाँ पे डिफेंडर भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सारे रोल्स ओवरलैप कर रहे हैं, आई थिंक डिस्टिंक्टिवली डिफेंडर मेंशन होना चाहिए था। ओके, डिफेंडर। जी अब्दुल राफे। So I don't have proper words, but I think कि मैनेजर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए अपने सारे जो भी उसके डिपार्टमेंट्स हैं, कि easily available, easy accessible by anyone, कि they can have their backs, like कि इसको proper words में I hope you're getting. Accessible. Okay, maybe he should be a socialist manager. Okay, anybody else? अब्दुल राफे ने तो शायद कह दिया। पिछली क्लास के अंदर स्टूडेंट में ज्यादा है तो आइडिया ज्यादा है, तो एक सजेशन ये है कि सर यहाँ पे टीम बिल्डर का रोल होना चाहिए, which I think makes sense. Why do I think that makes sense? Because टीम बिल्डिंग जो है ना, इट्स एन आर्ट। एक बैलेंस टीम क्रिएट करना कि जिसके अंदर वो तमाम स्किल्स उसी प्रोपोर्शन में हो जो कि आपको काम के लिए चाहिए, इट्स नॉट एन इजी टास्क। ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है कि आप 100% एक बैलेंस टीम क्रिएट करें। तो आई थिंक टीम बिल्डिंग कुड बी वन ऑफ द रोल्स जो कि शायद यहाँ पे ऐड होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से मिसिंग है। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो एक चीज हमें समझना जरूरी है यहाँ पे, जो मैं अक्सर कल्चरल डिफरेंस की बात करता हूँ और ये बात करता हूँ कि हम मगरबी दुनिया की जो थ्योरीज हैं और जो बातें हैं और जो किताबें हैं वही पढ़ पढ़ के जो है मैनेजमेंट समझते हैं, जबकि हमारी जो मशरक़ी दुनिया है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। तो इसको दोबारा हम एक थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि कल्चर्स को अगर हम डिवाइड करें तो बहुत सी क्लासिफिकेशन है, लेकिन एक क्लासिफिकेशन ये है कि कुछ कल्चर्स कलेक्टिविस्ट होते हैं और कुछ इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स वो होते हैं जहाँ पे लोग क्लोजली निट टुगेदर होते हैं, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं और सोशल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जबकि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर वो होते हैं जहाँ पे लोग काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते और एक दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर भी नहीं करते, अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो नीडलेस टू से हमारे जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं क्लियरली हमें नजर आते हैं कि वो काफ़ी हद तक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं, जो ईस्टर्न कल्चर वो काफ़ी हद तक कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं। अब कलेक्टिविस्ट कल्चर के अंदर मैनेजमेंट का जो स्किल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आप मैनेजर के पास लिबर्टी है ज्यादा कि वो डिग डाउन कर सके और एक ज्यादा इमोशनली क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड कर सके अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। वेस्ट में ऐसा मुमकिन नहीं होगा। वेस्ट के अंदर जनाब एक खास डिस्टेंस है जिस पे आपको रहना है, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होना, बहुत ज्यादा प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं करनी, लेकिन हमारे यहाँ टॉलरेंस इसकी कम है। कुछ लोग हैं फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स आईबी की जो फ्रेटर्निटी है उसके अंदर बहुत से ऐसे होंगे जो कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप अपनी वर्कफोर्स को देखें जाके तो उसमें 90% लोग जो है वो कलेक्टिविस्ट कल्चर माइंडसेट वाले हैं। और ये चीज आपने महसूस भी होगी, लेट से आप कभी कराची से लाहौर जाएं ट्रेन में बैठ के, जब ट्रेन से उतर रहे होते हैं तो वहां पे आपको मेरे ख्याल से जो कोई अजनबी होता है उसके आधे खानदान का पता होता है जब आप उतर रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम उसके क्या है जनाब, उसकी भाभी ने क्या कर दिया, उनकी मामी ने क्या कर दिया, वो सब आपको जो है स्टोरीज पता होती है। तो उसकी वजह यह है कि दे डोंट फील एनी प्रॉब्लम इन शेयरिंग दीज थिंग्स।
This is what I'm talking about. Now, what does it mean? What are the implications for management in Pakistan? The implications, what I believe, are that you can get emotionally closer to your people, और उससे होगा ये कि आपका जो relationship है उनके साथ वो अच्छा develop हो सकता है. Sometimes I think that एक role जो है manager का वो एक father figure के तौर पे भी होना चाहिए. एक फादर फिगर क्या होती है? जो कि जिसके पास रिसोर्सेज होती हैं वो देती है, डांटती भी है, कभी वो कभी प्यार से भी समझाती है, लेकिन उसका एक खास रोब होता है कि उसकी जो है वो अम्मी शिकायत बोलती है कि मैं अब्बू को बताऊंगी जब तुम कर रहे हो. वेरी कॉमन सेंटेंस. तो आई थिंक मैनेजर एक फादर फिगर भी हो सकता है, और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये फादर फिगर का एक इमोशनली क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है सबऑर्डिनेट्स के साथ, और इसकी वजह से एक मैनेजमेंट की जो फील्ड है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर. So I think this was important to understand. लेकिन generally speaking, जो मैंने any missing roles के बारे में लिखा है, तो we have to understand that we don't only have to always stick to what's being told to us. Try to think critically. और so there's this interesting fact कि गैलप ने एक सर्वे किया और उसके अंदर उसने मालूम पता चला कि the single most important variable in employee productivity and loyalty isn't pay or benefit, as I was saying. कि जो इंसेंटिव्स है, मॉनेटरी इंसेंटिव, वो खास हद तक जाते हैं. क्या इंपॉर्टेंट है? It's the quality of the relationship between employees and their direct supervisors. जो रिलेशनशिप है वो कितना अच्छा है. इस रिलेशनशिप की क्वालिटी की डेफिनेशन वेस्ट में अलग होगी, ईस्ट में अलग होगी. जिस तरह मैं बताया कि ईस्ट के अंदर आप ज्यादा इमोशनली क्लोज होंगे, हो सकता है उसकी प्राइवेसी के अंदर आप ज्यादातर मुदाखलत कर सकें, उसके मसले हल कर सकें, उससे वो आपके और क्लोज हो जाए, आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाए, फिर वो आपकी बात सुने, वो आपका जनाब ताबेदार हो जाए, वो कहते हैं. तो उसको ताबेदार बनाने के लिए आपको पहले उसकी मदद करनी पड़ेगी. तो दिस इज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. मरियम आसिफ, sorry sir, I think that Uswa says, sir, I think that manager should defend their team members if they see that the higher authorities above the manager are being unfair to their team members. आपने जो है ना उसवा काफी जो खतरनाक बात की वैसे ही, क्योंकि and this is a very tricky situation. If you are a middle manager, it's sometimes very difficult to decide कि आपको अपने बॉस की साइड लेनी है या अपनी टीम की साइड लेनी है. तो या तो आप ये काम करेंगे जब टीम के सामने बैठे तो जो है वो उसकी साइड लें, जब बॉस के सामने बैठे तो उसकी साइड लें. लेकिन ये खतरनाक काम है. Yes, sir. It's basically politics, but there should be someone defending the team members, right? This should Because be. और जो बेस्ट है वो ये है कि आप अपनी टीम को डिफेंड करें, लेकिन फिर ये याद रखिएगा कि आप अगर अक्सर ऐसा करेंगे और सिर्फ वन साइडेड रहेंगे तो फिर आप प्रमोशन भूल जाएं अपनी. फिर आपको कि जो टीम मेंबर है वो तो बड़ी आपकी तारीफें करेंगे, आपको काम कराना भी आसान होगा, लेकिन जब आगे की कंसिडरेशन आएगी तो आपकी फाइल रुक जाएगी कहीं जाके. ये बहुत कॉमन है. इसलिए सर कॉन्सिक्वेंसेस काफी मतलब डेंजरस हो सकते हैं. मतलब जैसे उसने ने कहा है कि अगर मैनेजर we should play it safe then. I mean, we should defend our team to an extent and also play it safe with the bosses. But there has to be a balance. It is not as much easy as we think. कि मतलब उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना आसान नहीं होता एक चीज को मैनेज करना. सर ने कहा है ना कि दोनों चीजों को इक्वली बैलेंस करके चलना चाहिए. Yes, basically we should play it safe with और both उसका the sides. फॉर्मूला क्या है? Nobody can tell. क्योंकि वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कंडीशन होती है, इसमें आपको एक्ट करना पड़ता है. लेकिन बस एक चीज ध्यान में हो कि तवाजुन रखना है, थोड़ा बैलेंस रखना है. हमेशा सिर्फ एक साइड पे नहीं होना, कभी किसी को लेना है, कभी किसी को, और बैलेंस लेके चलना है. Easier said than done, no doubt about that, but this is, तो जो लोग पहुंचते हैं ऊपर फिर वो उनके पास ये आर्ट भी होता है. तो और एक चीज बहुत अहम है यहाँ पे जो कि आपके यहाँ पे काम आएगी कि आपका जो काम है टेक्निकल, उसके अंदर अपनी महारत ऐसी कर लें कि फिर कोई कंपैरिजन ना हो. एक एरिया चूज कर लें और उसके स्पेशलिस्ट बन जाए. तो उसकी वजह से होता यह है कि फिर बॉस भी आपकी सुनता है क्योंकि यू मेक सेंस, और नीचे वाले भी आपको सुनते हैं क्योंकि यू गाइड देम. सही है. वो जब भी कोई फंसते हैं तो आपसे पूछते हैं, यू आर द स्पेशलिस्ट. तो ये एक काम है जो कि मैंने देखा है कि जो लोग इसके अंदर अच्छे हो जाते हैं, एक खास फील्ड में बहुत ही स्पेशलाइज कर जाते हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता फिर कंपनी में, उनके लिए प्रमोशन भी आसान होती है, उनकी टीम को समझाना भी आसान होता है, उनके लिए बॉस को समझाना भी आसान होता है. दिस कुड बी वन ऑफ द वेज आउट. कमेंट है, बॉस इज ऑलवेज राइट. Yeah, I mean, maybe not always, but in most of the cases.
come on. Why is manager's job changing? So let's have this as the last slide. There could be many reasons: technology, awareness, changing demographics, changing environment. Why technology? Because technology now helps you in monitoring in a very efficient manner. Technology helps you in speeding up the process. Technology helps you in spreading the word, dissemination. Technology helps you in minimizing your dependence on human labor. Now you can have machines working for you. तो इसकी वजह से मैनेजर की जो जॉब है उसके अंदर एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो गई है टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस की. A good manager should have some insights into what kind of technology can be employed to give a solution to a problem. This is a very important characteristic of a manager now. तो इसलिए technology is changing the dynamics. Awareness क्यों कह रहे हैं? Awareness ना सिर्फ manager की बल्कि आपके subordinates की awareness, because they now know कि सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, बात जो है वो जंगल की आग की तरफ फैल जाती है. अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर किसी को फेवर मिली है, now they know, now they expect the same favor from you as well, otherwise it will be very difficult to get the work done. तो ये जो अवेयरनेस वाली चीज है हर लिहाज से, न सिर्फ आपके कस्टमर्स की अवेयरनेस बल्कि एम्प्लॉइज की अवेयरनेस, इवन सम केसेस सप्लायर्स की अवेयरनेस. तो मैनेजर की जो चेंज है वो जॉब है वो थोड़ी सी मुश्किल हो गई. चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, डाइवर्सिटी बहुत बढ़ रही है. यहाँ पे जिस तरह मैं लाइफ यूनिवर्सिटी के अंदर देखूं तो मेरे पास ऑफ कोर्स जर्मन्स तो हैं, लेकिन पोलिश पीपल हैं, वी हैव टर्किश, वी हैव इरानियन, वी हैव Tunisian, we have Colombians, we have Mexicans. तो बहुत सी different regions से लोग हैं, different cultures से. तो जो manager है उसको सबको समझना है, सबकी requirement को, needs को समझना है. मैंने खासतौर से काफी जो है इनके लिए मसले पैदा किए हुए हैं, क्योंकि ना मैं जो हूँ वो कहीं पे भी अल्कोहल हो तो मैं वहाँ से जो फिर वो अल्कोहल फ्री चीज हो, और फिर ये वहाँ पे उसमें कोई हलाल मीट हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम मुस्लिम, तो आई हैव दिस रिक्वायरमेंट्स. तो ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं. तो अब जो हमारे मैनेजर हैं वो इसको सारी चीज ध्यान में रखनी है इससे पहले कि वो लेट से कोई गैदरिंग हो उसके अंदर मेन्यू डिसाइड करें. तो जस्ट एन एग्जांपल, सिमिलरली इस्लामाबाद जब मैं काम करता था वहाँ पे वी हैड पीपल फ्रॉम कराची, पेशावर, मुल्तान, Lahore, Islamabad, from many different regions. There were a lot of diversity in the team. तो ये demographics चेंज होने की वजह से of course आपकी जो मैनेजमेंट की स्किल्स हैं वो भी अब डिफरेंट रिक्वायर्ड है. चेंजिंग एनवायरनमेंट से मुराद है न सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट बल्कि एक्सटर्नल भी. पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिक्स है, एनवायरमेंटल दूसरे फैक्टर्स हैं. तो अब सिक्योरिटी सिचुएशन फॉर एग्जांपल कराची की, तो उस सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि अटेंडेंस पे इफेक्ट पड़ रहा हो. नाउ यू हैव टू मैनेज इट. तो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से भी मैनेजर की जॉब काफी हद तक चेंज होती है. लेट्स स्टॉप हियर. अगर कहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो यू कैन रेज. एक कमेंट में आपसे चाहूंगा कि मुझे ये बताइए, और लोग बहुत कम है, कि हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं इस वक्त. क्या आप चाहेंगे कि हम इसी पेस पे चलें, डिस्क्राइब करें चीजों को अच्छी तरह, या फिर ये कि ज्यादा कंटेंट कवर करें? व्हाट वुड यू से? नहीं सर, काफी है, सही पेस है, समझ आ रहा क्या है सर. काफी है? सर पेस सही है, ये पेस सही है. यस सर, इस तरीके से लर्निंग भी हो रही है और हम लोग ज्यादा इंटरेक्ट भी कर सकते हैं क्लास में. सर पूरी मतलब मैक्सिमम इंटरेक्शन हो क्वालिटी रही है. ओवर क्वांटिटी सर. कोर्स कंटेंट ज्यादा हो जाएगा वरना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा फिर. ओके सर जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो. कंटेंट. सॉरी सर जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो. Sir, whatever is feasible for you, it's okay. हाँ, कन्वीनियंट तो कन्वीनियंस की तो खैर बात नहीं है, लेकिन ये कि वही क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली चीज है. समटाइम्स वी जस्ट कवर टॉप कंटेंट्स फॉर द सेक ऑफ देम. लेकिन ये कि सही है. तो आई थिंक आई विल सी. पिछली क्लास के अंदर भी ज्यादा कमेंट्स यही आए कि सर यही पेस सही, लेकिन कुछ आवाजें थी कि सर ज्यादा थोड़ा सा तेज करें, बहुत स्लो है. तो आई विल सी, आई विल ट्राई टू एडजस्ट. इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नाउ. तो अपने कीबोर्ड संभाल लें, या अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो अपने पेन संभाल लें. आज का क्वेश्चन मैं सादा सा दे देता हूँ. सर आज लोग हैं नहीं इतने सारे, तो टेक अवे देना चाहिए. ये टेक अवे आज पिछली क्लास में भी हुआ है और आपकी क्लास के बहुत से लोगों ने उस क्लास में अटेंड किया था. टेक अवे तो हुआ है, तो फिर आपको भी देना होगा. ओके सर. वकास की हमने स्टोरी जो है पॉइंट के ऊपर ना डिस्कस की थी
क्या थी वो स्टोरी और उससे हम क्या सीखते हैं। तो इस वक्त हुए है 12 का मतलब ये हो गया इस वक्त 6:12 हुए होंगे आपके पास। 6:12 हो गया, 6:20 तक आपको ये जमा कराना है। 6:20 तक ये ईमेल पहुंच जाए आपके टीए के इनबॉक्स में। And when you're done, you can leave. Class has ended. I'll see you in the next class.